Hello students, this is the continued part of the permutation and combination. This is the combination. मैंने आपको बताया था यदि कहीं जब परमुटेशन आपको लगाना है तो उसमें क्या करते हैं, अरेंज करना है तो हम परमुटेशन का यूज करते हैं. जब सिलेक्शन का यूज करते हैं तो हमेशा ही कॉम्बिनेशन लगता है. इट मीन तो क्या है, लेट देयर आर n objects and select r objects at a time. Select r objects at a time. Then number of combination or selection are NCR. That is NCR equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ये हमारा फॉर्मूला है. NCR equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. For example, here there are 5 students and select 3 students for a party. Then number of selection are 5C2. That means 5 factorial, 2 factorial, 5 minus 2 factorial. That means 5 factorial, 2 factorial into 3 factorial. That is 5 into 4 into 3 factorial upon 2 into 3 factorial. कैंसिल हो गया. 2 2 जा 4. Then 5 into 2 10 आ गया. Then there is some result. First result, NCR. चलिए, NPR equal to R factorial times of NCR. This is the first result. Second, NCR equal to NC n minus R. This is the second result. Third, आवाज नहीं आ रही. NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. Fourth, NC0 is 1, NCN is 1, NC1 is N, NCN minus 1 is equal to N. Take the question. Find N
if NC8 equal to NC9, find N if NC8 equal to NC9, NC8 equal to NC9. ध्यान से देखिए, NC8 इक्वल टू NC9। वैसे तो क्या होता है भाई, इधर दोनों के n इक्वल है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल है, तो दोनों के r भी इक्वल होने चाहिए। तो 8 इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स अप्लाई द फॉर्मूला NCR equal to NCN minus R only in one side, not in both sides, either left side or right side. NCN minus 8 equal to NC9. On comparing, N minus 8 equal to 9, this implies N equal to 17. Next question. 2NC3 ratio with NC3 equal to 12 ratio 1. Find N. 2NC3 ratio with NC3 equal to 11 upon 1. 11 upon 1. Find N. Find N. तो क्या करेंगे हम? 2NC3 upon NC3 equal to 11 upon 1. 2NC3 ratio with NC3 equal to 11 upon 1. तो क्या करेंगे हम? 2n factorial upon 3 factorial, 2n minus 3 factorial upon n factorial upon 3 factorial, n minus 3 factorial equal to 11 upon 1. Just apply the formula for NCR in numerator and in denominator. क्या करें हम? जो डिनोमिनेटर है इसका उल्टा करके लिख दीजिए आप, जो डिनोमिनेटर है इसका उल्टा करके लिख दीजिए। Then this implies 2n factorial upon 3 factorial, 2n minus 3 factorial multiply 3 factorial, n minus 3 factorial upon n factorial equal to 11 upon 1. 3 factorial कैंसिल हो गया, 2n factorial ब्रेक कर दो, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 factorial upon 2n minus 3 factorial. भाई 2n और 2n minus 3 factorial 2n ग्रेटर है इसलिए इसको ब्रेक कर दिया, into n minus 3 factorial upon n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial equal to 11 upon 1. देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? This implies 2n minus 1, 2 common, n minus 1, n minus 1, n minus 2 equal to 11 upon 1. देखिए n कैंसिल हो गया, n minus 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया? 2 into 2 4, 8n minus 4 upon n minus 2 equal to 11 upon 1. It means 8n minus 4 upon n minus 2 equal to 11 upon 1. Cross multiply 8n minus 4, 11n minus 22. 8n minus 4,
इक्वल टू 11n माइनस 22, 8n minus 11n minus 22 plus 4, then that is minus 3n minus 18. तो n equal to 6 आ गया. Therefore n equal to 6 आ गया.